Sir, we are waiting for the students, sir. SP, sir. Experience and published more than 25 research papers in peer review journals. He is currently guiding three PhD students. Other than that, three experimental setups have been established by Professor S. Pratap at GCELI2 towards experimental learning. He is working toward various innovation-based entrepreneurs and startups, out of which two prototypes are ready for launch as a pilot project. I hope this session will be very helpful for you all and guide you to start your own venture in future. So as Sir, please, I Okay, please okay, sir. Okay, sir. Thank you very much. start your topic. Thank you very much, sir. Thank you. Sir, student can't interact with this session.
Yes, sir. Right. So, first of hello. So, I would like start this session with a question to the student, right? So, any two or three students can answer this question, and the question is, what is your dream? To be a employee or employer, or in other word, whether you want to be owner or you want to be a servant. So any one of the student, I need answer at least from three student present over here. Yes, anyone? Yes, I think Rishi want to say something. Rishi want to answer this question. Rishi Kumar. See, uh, The Priyank. there is no need of any hesitation. This is an interaction, right? Pri Priyank, can you share something? Hello. Sir, can you continue this in between the session you can talk, No problem, sir. interact So with the students. I'm going to present my screen. So, sir, whether my screen is visible? Hello, hello. It is visible, sir. Right. Fine. Fine. Thank you. So, see, uh, the topic of today's session is glance on GCLI2, that is Galgodia Center for Experiential Learning, Yes, Innovation sir. and Incubation. Innovation and incubation. So, goal, objective, and how to realize these goals and objectives. So, this will be the content of the today's presentation. Further content table includes about GCLI2, why GCLI2, that is need of GCLI2, key impact behind the GCLIP, and targets and outcomes. But then after that, execution outline for set for GCLI2, different experimental setups established at GCLI2, and how to realize your goal of innovation and incubation. So these are the content. First of all, about the GCLI2. So in 2018, Ministry of Education, Government of India has started MOE Innovation Cell, that is Ministry of Education Innovation Cell. And the objective behind this establishment of MIC was to foster the culture of innovation among the higher education educational institutions, and to encourage, inspire, and nurture young students by supporting them to work with new ideas and transform their ideas into prototypes. So with these two objectives, Ministry of Education has started MIC.
Also, MIC envision encouraging of creation institutions innovation cell across the selected HEI, that is higher educational institutions. So with this motivation of MIC, we have started Galgotia Center for Experiential Learning, Innovation and Incubation, abbreviated as GCLI2, in 2021. So uh, further, just a minute. So the goals set, or you can say different activities set by the MIC are these. That is, first of all, IIC calendar driven activities, then self driven activities, then MIC driven activities, and celebration day activities. So these are the different activities set by the MIC, that is MIC for the IIC. So also the weightage of different activities are given here. For ISC calendar driven activities, it is 50%, and likewise it is 30%, 10%, and 10% and 10% for different activities. So this is all about the IIC. Why this is all about the GCLI2. Why we have started the GCLI2? Basically to accomplish all these activities in at the institution level. Now, what is the aim? Why we have started this GCLI2? So first of all, what is the aim behind GCLI2? So the very clear aim behind the GCLI2 is to develop a multidisciplinary ecosystem for innovation-based entrepreneurship and startup, and that finally lead to multi-business model. So basically, my question that I have asked at the starting of this presentation was whether you want to become a servant or become owner. So this aim actually lead you to become owner rather than servant. Fine. So this is the aim. Then what are the essential steps required to achieve this aim? These are, first of all, proof of concept, which further results in some research article and finally patent or IPR. Second step is to develop development of prototypes. This results in technology or prototype itself. And then third and last step is launch of pilot project, which finally results in devices or product. So these are the different essential steps behind this to achieve this aim. Now, who will accomplish these steps? So it's a very clear. Though in order to accomplish or achieve these steps and thereby to achieve the aim, there is a need of skilled technocrats, devoted researcher, and excellent inventors. So next, again, question arises: how to produce these skilled technocrat, devoted researcher, and excellent inventors? So the single word is experiential learning, and this is the heart of the GCLI2, that is named as Galgotia Center for Experiential Learning, Innovation and Incubation. So once again, in reverse order, we at GCLI2 we will create we have started experiential learning. This experiential learning will lead to technocrat, skilled technocrat, devoted researcher, and excellent inventors. These inventors will take these steps, that is proof of concept, develop a prototype, and lot of pilot project, and finally the aim will be accomplished or achieved. Now, what are the different impact of this GCLI2? So first of all, this is the first experiential learning in Knowledge Park, and probably in, as per my best knowledge, in NCR. This is the first experiential learning in NCR, probably, as per my best knowledge.
Second, this experiential learning will be based on the experimental setup, which this will create TRI, which I have discussed already. These TRI will secure their place in best industry, research organization, institutions, and university around the globe. Further, these TRI will also develop innovation-based entrepreneurship and startup. And the motto of behind establishment of MIC is that government want at least 10% of total intake as entrepreneurship and startup. So with this, we have set some target for GCLI2 and as well as their outcomes. So there are some fixed target and outcome for GCLI2. So first target is to establish an unique research center of India, and this center will be a center for nano communication, which will be a multidisciplinary in nature, and it is having potential of multi-business model because it means the application of this CNC will include almost each and every field of the society. So this is the first objective and respective outcome. Second target is to implement experiential learning, and already outcomes we have means in previous slide we have presented this outcome for GCL means experiential learning. Then these are few other parameters which are beneficial, that is to contribute in various accreditation body like NBA, NAAC, and etc., and to contribute in various ranking body like NIRF, HUTTL, NIC, etc., and also to to meet the requirement of funding from different agencies like MSME, DST, ICT, and so on. Now, next target is to contribute in outstanding placement. So outcome will be basically experiential learning and innovative mindset is required, is the basic requirement of all the industries. So with this, with the help of experiential learning, we will produce these experiential learning and innovative mindset. Next, to focus world-class institution for higher studies. So basically, all the world-class institutions or university ask for good publication or patent as a criteria for admission in their institutions. So through this experiential learning, obviously general and patent will be in credit of a student, and which can be used for their admission in higher class institution, world class institution. And also the objective target of Sir. this center is to establish. Yes, yes, sir. Sir, can you please tell me what is experiential learning? Okay, experiential learning is basically a learning which is based on the experimental setups, right? I think you have some laboratory experience in which you used to experiment, okay, and find the result. So that complete process which you are performing on experimental setup is a experiential learning. Is it okay? Okay, sir. Thank you so much, sir. Okay, thank you. Anyone else? I think you can write the question. And Sir, there is one more question. Right. Sir, can you please explain the difference between innovation and incubation? See, innovation is something to develop some new ideas, novel ideas, or novel products, or anything which is novel. It may be in the form of some prototype, that is physically, or it may be in the form of some software. It may be even some idea itself, not needed exactly the physical thing, right? On the other hand, equation is term how we can help you people to achieve your goal as innovator.
right? Whether it is a funding, whether it is a mentorship, or whether it is a infrastructure, office, everything, whatever you need for your means accomplish your innovative idea, fine, to develop product from your innovative ideas, all the support comes under incubation, right? So thank you. So this GCLI2 is means the basic you can say objective of this GCLI2 is to support you people to develop product or something, product maybe some software as well, to develop something from your innovative idea. So to help you in all the ways, what type of help you need. Once again, I want to repeat, whether it is a fund, means you need some money to develop your product, whether you need some mentorship support, whether you need some infrastructure, whether you need some outside interaction or outside collaboration. So in all the sense, GCLI2 would like to help you. Is that clear? I think it's okay. Hello? Yes, sir. It is clear, sir. Okay, thank you very much. Thank you. So more question will be encouraged, right? So thank you very much. Now the execution outline for this GCLI2. So first of all, this, as I stated many times, the focus of this center is to provide experiential learning, and basically it will be based on the experimental setup, right? I think once again your question has been answered. So now at present we have two experimental setup developed at GCLI2 center, and these experimental setup has been developed in order to fulfill the usefulness in today's society. Okay, so next with these experimental setup, we start selecting some pool of students from different departments and make a team. The selection of these pool of students depends on different module. Different module means, suppose there is a setup of drone. So in that drone, there is a need of mechanical engineer, there is a need of computer engineer, there is a need of AI people, artificial intelligence people, be it machine learning and deep learning or anything, data analytics, everything. And also electronics and communication, electrical engineering. So from all the departments, we used to select the student and make a pool of students for different modules. So in each and every module, there is a student from each department according to their requirement. Then this already I have said, these experimental setup include or accommodate students from all the department or all the branches of engineering and technology. So these members devoted to particular module are instructed to carry out extensive research survey. In the the main thing is how your work will help the society, how it will be useful for the society. So keeping this fact in mind, you have to start with extensive research survey, and during this research survey, a supervisor will be allotted to you out of the GCLI2 members, or maybe also other member other than GCLI2 member from any department. So after completion of this extensive research survey, there will be a series of discussion, and with this series of discussion, there will be a problem statement. Means
with the series of discussion, there will be a problem statement finalization. So now at the at the last of this problem statements, there will be further discussion to assure the following thing in your product. Okay, when I'm telling product, then it doesn't mean some physical form. It may be some software or any physical and non-physical form. It may be some app also. So, but we used to assure that whether this product is going to add inventive step to hypothesis. This is the first criteria to select your problem definition. Then whether this problem statement you have defined, whether it is going to add development to the technology. Again, whether it is going to add some novelty to the existing system. Again, whether it is going to add some capability to the industry, current industry. And finally, whether, and this is the final one, whether it is going to add some value to the society. So the main criteria behind the finalization of problem statement are these. Now, the experimental setup which we are having are in fact are under a developing state. This is first one is the drone development for different application. Then self-driving vehicle development for future application. Then nano satellite development for versatile application. So these are the experimental setup which we are having at GCLI2, on which student from any department can come and work. Now, how to realize? So first of all, once again, I would like to ask a question to the student. Or let me continue. I will ask it at the end of the session. So before start towards realization of our innovative idea, towards entrepreneurship and startup, we must know few terminologies. So very crisp form, I have presented few terminologies over here. First of all, we must know the difference between knowledge and experience. So what is knowledge? Knowledge with any accumulation of information, which is basically you used to achieve through study. So accumulation of knowledge, accumulation of information is knowledge simply. But what is, on the other hand, what is experience? So the anything which you get out of learning is known as experience. So the first requirement towards this innovation-based entrepreneurship and startup through GCLI2 is to have some experiential knowledge, that is experience based on the learning. Now, the way to the innovation. So there are many ways, so there are many ways which are listed over here in the short form. So way to innovation, the first step is facts with perfection. Means if you want to go for some innovation, the first step, you must have some facts, some knowledge or learning or experience with perfection. Then on the basis of those facts, you have to inquire different things. How it is happening, what it is, how it could be, all the question, why, how, what, all the question you have to answer in the second step. Then analyze these questions in a very sincere way. After that, there will be synthesization of something, some ideas itself, and then you can work on experimental setup and you go for the hypothesis, right? So these are the different steps
towards way to the innovation. Now let's start with the GCLI2. So first thing is you have to present your idea in front of GCLI2 member. Idea will be finalized after series of discussion, and at the next step there will be a formation of team and so on. So on means there will be so many steps. It can not be summarized in few slides in 1 hour. So there are so many steps which you have to take in under the supervision of able of respective department. So this is all about how to realize your innovation-based entrepreneurship and startup to GCLI2. Now at this stage, I want to ask some question again. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So once again, I want to ask some question to the student, right? So students, are you ready to answer the question? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So it's comfortable now, right? So see, my first question is that do you feel, of course you are having some idea, as I know, you are having some idea to develop it in the form of product, but whether you are capable to complete it, right? Anyone? By your own? Sir, can you please repeat it? देखिए, अच्छा एक चीज मैं पूछता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो हिंदी में कंफर्टेबल होंगे? क्योंकि मैं जो आगे की बात करने जा रहा हूं वो मैं प्रेफरेबली हिंदी में करना चाहूंगा। अच्छा एक बात बताइए, आप में से, हाँ मैं इस क्वेश्चन को उल्टा कर देता हूं, आप में से कोई ऐसे हैं जो हिंदी में कंफर्टेबल ना हो? यस सर। हु इज दैट? मैंने पूछा जो हिंदी में कंफर्टेबल ना हो। यस, एनीवन? Why I'm asking this question? If there are some students from South India, okay, so he or she may not be comfortable in Hindi. So it is like that. Is it like that? Whether some student belongs to South area, South India? Yes? No. It's okay. I'm starting in Hindi. Is it okay? Okay, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, sir. तो देखिए, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि अभी तक का जो मैं प्रेजेंटेशन दिया वो एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन था, राइट? और ये सारी स्लाइड आपको अवेलेबल होंगी, और जैसा मैंने कहा कि 1 घंटे में कुछ स्लाइड के थ्रू सारी चीजें आपके अंदर इनकलकेट नहीं की जा सकती, राइट? तो मैं ये जो स्लाइड शेयर किया हूं अभी तक, ये कंप्लीटली फॉर्मल स्लाइड्स हैं। आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि आपके गलगोटिया कॉलेज में एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, जिसमें 2-3 एक्सपेरिमेंटल सेटअप हैं, जिसमें सारे डिपार्टमेंट के लोग आकर के काम कर सकते हैं, और उन सब लोगों को जो भी अपने इनोवेटिव आइडिया को प्रोटोटाइप में डेवलप करना चाहते हैं, प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, बिजनेस मॉडल तक ले जाना चाहते हैं, उन सब के लिए GCLI2 हर टाइप की फैसिलिटी अवेल कराएगी। हर टाइप मीन्स आपको फंड की जरूरत होगी, इट विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ GCLI2, राइट? वेदर मैनेजमेंट विल
ग्रांट यू फंड डायरेक्टली, बहुत सारे स्टूडेंट को ऑलरेडी ग्रांट हुए हैं GCLI2 के थ्रू अभी इस साल में 2021 से 22 के बीच में। दूसरी बात आती है, आपको मेंटरशिप की जरूरत पड़ती है, आपको कहीं बाहर के लैब से कुछ कोलैबोरेट करके काम करना होता है, या आपको किसी एक स्पेस की जरूरत होती है अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, एंड सो ऑन। तो जिस तरह की भी आपको फैसिलिटी की जरूरत होगी वो GCLI2 अवेल कराएगा। सारे क्रक्स जो है इस सारी प्रेजेंटेशन का सिर्फ इतना सा है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं फिर से एक बार पुरानी स्लाइड में जाना चाहूंगा, वेरी क्लियर कट ऑब्जेक्टिव GCLI2 का ये है। माई स्लाइड इज विजिबल टू एवरीवन? स्लाइड मेरी दिख रही है सबको? यस सर, यस सर, यस सर। ये बहुत क्लियर कट ऑब्जेक्टिव का एम है कि हम एक मल्टी डिसिप्लिनरी इकोसिस्टम डेवलप करना चाहते हैं। ये हमने वर्ड हाईलाइट कर रखा है, हम एक मल्टी डिसिप्लिनरी इकोसिस्टम डेवलप करना चाहते हैं। किसके लिए? इनोवेशन बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप के लिए, राइट। और ये जो एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप है, ये फाइनल इसका जो फाइनल टारगेट होगा, फाइनल स्टेज होगा, वो क्या होगा? मल्टी बिजनेस मॉडल। तो ये OM हमारे दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि वी वांट टू डेवलप अ मल्टी डिसिप्लिनरी इकोसिस्टम, ठीक। इनोवेशन बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप को हेल्प करने के लिए, जो कि फाइनली बिजनेस मॉडल तक जाए, राइट। तो ये दो बातें थी जो मैं आपको कन्वे करना चाहता था कि GCLI2 आपको क्या क्या मदद कर सकता है और GCLI2 का क्लियर कट एम क्या है, ठीक है। तो ये दो बात आप अपने दिमाग में भी रख सकते हैं। उसके अलावा मुझे पता है आपको n नंबर ऑफ कंफ्यूजन्स होंगे, n नंबर ऑफ क्वेरीज होंगी, तो आप GCLI2 को अप्रोच करिए। 9 to 5 लैब खुला रहता है और आपकी हर क्वेरीज को आंसर किया जाएगा, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाला जाएगा, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाएगा। इज दैट ओके? सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल दीज स्लाइड्स। ये जितनी स्लाइड हमने प्रेजेंट किया उनका क्रक्स मैंने जो 2-3 लाइन बोला वो है, राइट। अब मैं दूसरी बात आपसे ये पूछना चाहता हूं, अभी मैंने पूछा है कि क्या आप लोगों को लगता है कि आप लोग बिना किसी हेल्प के ये इनोवेशन बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप को बिजनेस मॉडल तक ले जा सकते हैं? No sir, sir, we need some guidance. Okay, so you need some guidance, right? देखिए, गाइडेंस तो अवेलेबल है ही, टेक्निकल गाइडेंस। लेकिन अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि टेक्निकल गाइडेंस के साथ साथ आपको एक ओवरऑल जो आपकी आई की रिक्वायरमेंट है, इमोशनल रिक्वायरमेंट है, राइट, फिजिकली मेंटली आपको हेल्दी होने की रिक्वायरमेंट है। आई एम यूजिंग स्पेशली दीज वर्ड, फिजिकली और मेंटली हेल्दी होने की रिक्वायरमेंट है। आर यू एग्री विद दिस और नॉट? यस सर। देखिए, अगर ग्रेट काम आपको कुछ करना है तो यू मस्ट बी फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी, राइट? इज इट ओके? इज इट ओके? हेलो एनीवन, इज इट ओके ना? ओके, यस सर। आपको एक शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की जरूरत है। तो मैं आपसे ये ऑन द बिहाफ ऑफ GCLI2 एंड GCET एज वेल, गलगोटिया कॉलेज के अंदर ही GCLI2 है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप GCLI2 में ये जो दूसरी वाली हेल्प है ये भी अवेलेबल होगी, राइट। और ये जो हाउ टू रियलाइज स्लाइड है, इन्हीं के एड ऑन में मैंने कुछ स्लाइड रखा है इसी टाइटल के अंदर, और वो थोड़ा सा एक ग्लिम्स है कि हम आपको फिजिकली और मेंटली कैसे हेल्दी कर सकते हैं आपके गोल को अचीव करने के लिए, राइट। सो आई एम हैविंग 3 more स्लाइड इस पर्पस के लिए, और वो एक ग्लिम्स है, लेकिन आपको पता है कि वो कुछ 5 या 10 मिनट में आपको फिजिकली और मेंटली हेल्दी नहीं किया जा सकता, लेकिन
वो कैसे हो सकता है उसका आइडिया हम अगले 5 से 10 मिनट में देने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। मैं एक बात और रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले जो 5-10 मिनट हैं वो मेरे प्रेजेंटेशन के होंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसमें इंटरैक्ट करें। आपकी कोई क्वेरीज हो तो फुली आप इंटरैक्ट करें। देयर इज नो बाउंड ऑफ टाइम, राइट। सो द फर्स्ट स्लाइड फॉर दिस इज, देखिए जीवन में जब आप कहीं पे भी खड़े होते हैं तो आपके पास 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है जो डिपेंड करता है पसंद और नापसंद पे, आपको क्या लाइक है और क्या डिसलाइक है। तो याद रखिए ये जो लाइक और डिसलाइक का रास्ता होता है ये बड़ा आसान होता है इसको अचीव करना, लेकिन हमेशा ये आपको नीचे की तरफ ले जाता है, आपको हमेशा डिग्रेड करता है। आपके मेंटल कैपेबिलिटी, आपकी फिजिकल कैपेबिलिटी, हर कैपेबिलिटी को डिग्रेड करता है, उसको हम हिंदी में अवनति कहते हैं। तो ये रास्ता हो गया ना पसंद और नापसंद का। दूसरा रास्ता होता है कि आप दुनिया में कुछ ग्रेट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, जिसको हमने हिंदी में लिखा है महत्वपूर्ण योगदान देना चाहते हैं आप। अगर आप कोई महत्वपूर्ण योगदान देना चाहते हैं तो वो कर्तव्य का मार्ग होता है, ड्यूटी का रास्ता होता है, और वो हमेशा कठिन होता है कंपेयर टू पसंद और नापसंद के रास्ते पे। तो सबसे पहला स्टेप आपके जीवन में यही होना चाहिए, आपने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया है, एक महत्वपूर्ण योगदान देने के उद्देश्य से ही लिया होगा। आपका एम यही होगा कि हम बहुत कुछ अच्छा करें पूरे ह्यूमैनिटी के लिए, पूरे ग्लोब के लिए। तो ऑब्वियसली आप इस दो राहे पे खड़े हैं आज की डेट में कि आप कौन सा रास्ता सेलेक्ट करना चाहते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। दूसरी चीज, देखिए मैंने अभी आपसे कहा कि जब भी आप कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आपको फिजिकली और मेंटली हेल्दी होना पड़ेगा। फिजिकली और मेंटली हेल्दी होंगे, ये कैसे रिफ्लेक्ट होगा, ये कैसे दिखेगा कि आप फिजिकली और मेंटली हेल्दी हैं? ये ऐसे दिखता है कि जब आप खुश हो, आप आनंद में हो। जब आप आनंद की स्थिति में होते हैं, ये इंडिकेट करता है, ये ऐसा दिखाता है कि आप फिजिकली और मेंटली हेल्दी हैं। क्योंकि जब तक आप फिजिकली और मेंटली हेल्दी नहीं होंगे तब तक आप आनंद में नहीं होंगे, आप खुश नहीं होंगे। तो अगली स्लाइड में हमने कुछ वे डिस्कस किए हैं कि आप कैसे मेंटली और फिजिकली हेल्दी, एटलीस्ट मेंटल हेल्थ कैसे अचीव कर सकते हैं। तो ये एक फिगर है, देखिए सबसे ऊपर लिखा है सतचित आनंद, मतलब हैप्पीनेस। और मैंने कहा है कि किसी भी ग्रेट काम करने के लिए जरूरी है कि आप हैप्पीनेस में रहें, आप खुश रहें। तो देखिए हमारे ये जो सेंटर है एनर्जी के, हमने इनको ओवल शेप में दिखाया है, और इन डिफरेंट सेंटर ऑफ एनर्जी के कुछ क्वालिटीज होती हैं, कुछ उनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। जैसे मान लीजिए जो पहला वाला सेंटर है, इसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक है। एक है ये तृष्णा, तृष्णा मतलब डिफरेंट टाइप की डिजायर्स रखना, और दूसरी है सृजनात्मकता, मतलब कुछ इनोवेशन। आपने पूछा था इनोवेशन, कुछ इनोवेटिव करना। तो इस सेंटर की ये 2 कैरेक्टरिस्टिक हैं। इस सेंटर की एनर्जी फिक्स है, आपको पता है हर चीज की एनर्जी फिक्स है, तो इस सेंटर की भी एनर्जी फिक्स है। तो आप पे डिपेंड करता है कि उस एनर्जी को आप तृष्णा यानी डिजायर के लिए लगाना चाहते हैं, पसंद और नापसंद में लगाना चाहते हैं, या कि कुछ आप सृजनात्मक करना चाहते हैं, कुछ आप इनोवेटिव करना चाहते हैं। उसके ऊपर का जो सेंटर है उसके 2 कैरेक्टरिस्टिक है, घृणा और प्रेम। अगेन इस सेंटर का भी एनर्जी फिक्स है, या कि आप घृणा की तरफ एनर्जी को डाइवर्ट कर सकते हैं, उतनी ही कम एनर्जी हो जाएगी प्रेम के लिए, या कि फिर आप प्रेम में अगर एनर्जी डाइवर्ट करते हैं तो घृणा के लिए उतनी कम एनर्जी बच जाएगी। तो ये आपकी चॉइस है।
कि आप लेफ्ट जाना चाहते हैं कि राइट जाना चाहते हैं। एंड फाइनली जो सबसे ऊपर है एनर्जी का सेंटर, वो कैरेक्टराइज्ड होता है क्रोध से और विवेक से। तो ये आपको अच्छे से ध्यान है, आपके ये चीज आपके अनुभव में जरूर होगा, नॉलेज में नहीं अनुभव में होगा, कि जब आपको क्रोध आता है तो आपका विवेक, आपकी सोचने की क्षमता क्षीण हो जाती है। तो अगेन ये सेंटर की एनर्जी फिक्स है, आप उसको क्रोध में खर्च करना चाहते हैं या क्रोध में ना करेंगे तो बची हुई एनर्जी विवेक में खर्च होगी। जितनी ज्यादा विवेक में एनर्जी लगाएंगे क्रोध की एनर्जी उतनी कम हो जाएगी। और इधर राइट हैंड साइड में देखिए कि जो सृजन शक्ति है वो ऊपर उठ करके प्रेम की शक्ति बनती है, और वो ऊपर उठ करके विवेक की शक्ति बनती है, और फाइनली विवेक से हमें सच्चित आनंद प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हमें ये सेलेक्ट करना होगा कि अगर हमें कुछ ग्रेट, हेलो यस एनीवन। सो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि अगर हमें कुछ ग्रेट कंट्रीब्यूशन करना है तो हमें सुखी रहना है, हमें आनंद में रहना है, तभी हम कुछ ग्रेट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और ये एक 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 आउटलाइन है कि हम कैसे एटलीस्ट मेंटली हम कैसे आनंद की स्थिति में रह सकते हैं। एक और लास्ट स्लाइड है, और वो स्लाइड है कि हम अपने, जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ डिसाइड किया कि मुझे ये अचीव करना है, आई हैव टू अचीव एट एनी कॉस्ट, तो कुछ उसके लिए मीन्स कंपोनेंट्स हैं, जिन कंपोनेंट्स को या जिन बातों को ध्यान में रख करके आप जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। ये नेक्स्ट स्लाइड में हमने प्रेजेंट किया है। देखिए हमने यहाँ लिखा है नियति का निर्माण। नियति मतलब आपका भविष्य, आपका डेस्टिनी, राइट। तो अपने डेस्टिनी को खुद आप निर्मित कर सकते हैं। आपके डेस्टिनी का डिसीजन, उसको डिसाइड करना आपके हाथ में है, लेकिन उसके लिए ये 4 स्टेप आपको लेने होंगे। आप ये सेव कर लीजिए, आप ये पीपीटी से लिख लीजिए या मैं शेयर कर दूंगा। ये 4 स्टेप आप 15 दिन तक फॉलो करके देखिए और कोई एक गोल फिक्स करिए और इसको प्रैक्टिकली करके देखिए कि क्या जो मैं बोल रहा हूं रियली इज इट वर्किंग इन दैट डायरेक्शन, राइट। तो देखिए नियति का निर्माण आपको करना है, अपने डेस्टिनी का निर्माण करना है, अपने भविष्य का निर्माण करना है। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि अपने आप पे विश्वास करें। यस आई कैन डू इट, राइट। ये विश्वास करें कि मैं अपने भाग्य का निर्माता बन सकता हूं, राइट। और ये मेरी बात नहीं है, ये स्वामी विवेकानंद की बात है कि आप अपनी डेस्टिनी खुद बना सकते हैं, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, अपने आप पे भरोसा रखिए। सेकेंड स्टेप में अगेन 3 सब स्टेप है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले वो क्या करना चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है, वो लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। तो आपको अपने आप से प्रश्न पूछना है दूसरे स्टेप में कि क्या मेरा लक्ष्य स्पष्ट है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछना है आपके आपको, क्या मैं सदैव सजग हूं। सदैव सजग का मतलब ये होता है कि क्या आप हर एक सेकंड का प्रॉपर यूज कर रहे हैं, हर एक सेकंड को 100% यूटिलाइज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि क्या मैं सदैव सजग हूं। आफ्टर दैट अगेन वही वाली बात, सजग होंगे तो हर पल का सदुपयोग करेंगे। देन तीसरा स्टेप है कि जो आपके कर्तव्य कर्म है, जो आपने डिसाइड किया है लक्ष्य, उसके लिए कुछ डिजायर्ड ड्यूटीज होंगी। तो क्या उन डिजायर्ड ड्यूटीज को आप शांत मन से कर रहे हैं, बिना इम्पेशेंस हुए, बिना हड़बड़ी में हुए, क्या अपने कर्तव्य में आप लीन हैं। दिस इज द मीन्स वन पार्ट ऑफ थर्ड स्टेप। फिर उसके बाद अटूट विश्वास अगेन एक बार आपको जगाना है कि जितनी एनर्जी चाहिए
हमारे लक्ष्य को अचीव करने के लिए वो सारी एनर्जी मेरे अंदर है। और आफ्टर दैट कुछ गाइडलाइंस हैं जो हर वक्त आपको चेक करने होगा अपने अंदर कि आपकी संकल्प जो है, आपका डिटर्मिनेशन जो है, वो कहीं कमजोर तो नहीं हो रहा है। क्या आप अथक परिश्रम कर रहे हैं? क्या आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं? और क्या आप निस्वार्थ होकर के अपना काम कर रहे हैं? तो ये कुछ 4 स्टेप हैं जिनको रिजिड वे में फॉलो करके आप अपने भाग्य का, अपने डेस्टिनी का निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने आपसे कहा कि 5 से 7 मिनट में कुछ आपके साथ, आपके अंदर इनकलकेट नहीं किया जा सकता, लेकिन मैंने ये प्रेजेंट करने की कोशिश किया है कि GCLI2 ना सिर्फ आपको टेक्निकली स्ट्रेंथन करेगा, टेक्निकली आपको मोटिवेट करेगा, आपको हेल्प करेगा, बल्कि आपको जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ है, वो फिजिकल हेल्थ वाला पार्ट दो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, हर तरह से आपको GCLI2 आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा, राइट। और गोल याद रखिए, गोल एक ही है GCLI2 का, इनोवेशन बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप that will lead to business model, right? So this is all about from my side. Now you may ask n number of questions. Any questions? No, sir, already cleared. So okay, Yes, sir. I would like to see you people at GCLI2 very soon. Thank you, sir. Thank you. Thank you for the innovative talk. I hope that this Thank you session so will much, be sir. very helpful for you all and guide you to start your own startup or to become a good or a successful entrepreneur. Thank you, sir. As Pratap, sir. So Thank you very okay, sir, much. okay, sir. अप्लाइड Thank you साइंस very की much. तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका, आप आए Okay. और इस तरह से बच्चों को एनलाइट किया। थैंक जी यू सर। सर। Thank you very much. Thank you. Thank you. Hello. Zero.